Hello students, I am your mathematics teacher Chan Thakur, Government Senior Secondary School GB. Today's my video is for class 9th on chapter Introduction to Euclid Geometry. Today we will discuss part 4 of exercise 5.1. In previous parts we have discussed about the Euclid geometry, its brief history, and then Euclid's definitions, Euclid's axioms, and Euclid's postulates. After that, we have completed first 4 questions of the exercise. Now we will discuss question number 5. In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Now let C and D be the two midpoints of line segment AB. Now we are considering that instead of one, there are two midpoints for a given segment. If C and D are the midpoints, then we may write AC is equal to half of AB. Okay, this is equation 1. So we have proved it in the previous question, that is question number 4. In question number 4, that from midpoint the two parts are equal and are equal to half of AB, that means half of a whole. For D point, we may write AD is equal to half of AB, because both are the midpoint of the given segment AB. So from equation 1 and equation 2, the two parts, the two sides, that is AC and AD, are equal. This implies D coincides with point C. Hence we conclude that midpoint of a line segment is unique. That means C and D are the same points, and by this we conclude that there is only one midpoint for a given line segment. Next question is question number 6 in figure 5.10. If AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. See, the diagram is like this. So let AD is a line segment and B and C are the 2 points on the line segment AD. Okay, now see here, you have given AC is equal to BD in this diagram, that is AC is equal to BD. Let this is equation 1. From diagram, AC is equal to AB plus BC, because B is the point which lies between A and C. So see from diagram that AC may be written as AB plus BC. Okay, because B is the point which is lying between A and C. Similarly, BD may be written as BC plus CD, because C is the point which is between B and D. So it may be written as BC plus
CD. This is equation 3. So now we will put the values of equation 2 and 3 in equation 1. Then equation 1 becomes AB plus BC is equal to BC plus CD. Now these are the two equal quantities. You know from the axiom of the Euclid's axiom, we may subtract the same thing, means same quantity from two equals. Let me subtract BC from both sides. Then we have an equation like this, that is AB plus BC minus BC is equal to BC plus CD minus BC. This implies AB plus BC minus BC is equal to BC minus BC plus CD. So BC minus BC is equal to 0 on both sides. Then we have left with AB is equal to CD. Okay, like this means BC minus BC 0, BC minus BC 0. So now we have left only AB on the left side and CD on the right side. So from here we get AB is equal to CD. Now question number 7. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered as a universal truth? First of all, what is axiom 5? It states that the whole is greater than the part. Okay, let us consider an example of this line segment A, B. See, let this is the whole thing. If we make its two parts by considering any point C on this. Now we have its two parts AC and BC. It is visually you can see that AC and BC, the two parts of its two parts are always smaller than the whole part, that is AB. That means the whole, that is AB, is greater than the part, that is AC and BC. Okay, now next thing is why it is universal truth. Since this is true for anything in any part of the world, so this is a universal truth. Next is exercise 5.2. This first question is, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? तो हम इसमें देखेंगे जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो उसको हम किस तरह से आसान तरीके से लिखेंगे कि हम उसको अच्छे से समझ सकें. So that is when two lines are cut by a third line such that sum of interior angles is less than 180 degree on one side, then the first two lines intersect on the same side. कहने का अर्थ ये है कि अगर दो लाइंस आपके पास दे रखी है, मान लीजिए इस तरह से, एक थर्ड लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, मान लीजिए एक तीसरी लाइन है जो दोनों को दो अलग अलग बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसमें जो एक तरफ को जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि ये मान लीजिए ये है कोण 1, कोण 2, ये कोण 3, कोण 4. तो कोण 1 और 2 एक तरफ को हैं और कोण 3 और 4 दाईं तरफ को है. ठीक है, तो जिस तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ को जो है पहले वाली दो लाइनें यानी कि एल और एम उस तरफ को मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि इंटरसेक्ट करती हुई, प्रच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, या प्रच्छेद करती है. कब? जब हम इसको बढ़ाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे तो एक बिंदु हमें मिलेगा जहाँ पर ये दोनों लाइनें
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और किस तरफ को ये प्रतिच्छेद करेंगी? जिस तरफ को के जो इंटीरियर एंगल्स का योग जो है ये सम है वो 180 डिग्री से या 180 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड्स फिफ्थ, नॉट 50, ये 50 हो गया है यहाँ पे, ये फिफ्थ है, फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। कहने का अर्थ है जो ये हमने अभी जो इसकी डेफिनेशन दी है यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट की, तो उसको आप क्या इसको एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए जिम्मेदार बता सकते हैं कि भाई ये ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन भी नाम की कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। इट मे बी आर्ग्यूड दैट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। कहने क्या अर्थ ये है कि हम कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ, जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है उसने जो है पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस को माना था, या पहचान लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड। देखिए हमने क्या कहा था इस पोस्टुलेट में कि भाई लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी? जिस तरफ को कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तभी जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। परंतु अगर दोनों तरफ जो है इंटीरियर एंगल्स का सम जो है इक्वल होगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा, तब क्या होगा, जो लाइंस हैं वो दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो जो नेवर इंटरसेक्टिंग इंटरलाइंस लाइंस होती हैं उनको ही हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, तो यानी कि सो इट if two lines never intersect they are called parallel lines। so इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।